user enters into the record. It's सर इसमें कि जो भी आंसर दे रहे हैं टर्न ऑन योर कैमरा गाइस विदाउट कैमरा ऑफ करके कोई भी इंटरव्यू नहीं देने वाला है हाँ, कैमराज ऑन करो ना सब जगह आप लोग, ऑल ऑफ यू। आपको बोला एक्सपीरियंस था, नहीं बैठे कोई भी यहाँ पे ऑल ऑफ यू। यस। और ये इंस्ट्रक्शन 10 बार नहीं दी जाएगी ये तो कॉमन है इंस्ट्रक्शन, जब इंटरव्यू लेते हैं तो आपको रहना ही है वैसे। ओके। अक्षय सोलंकी। यस। यस सर What is the validation rules and what are the use of validation rule, and give the one example uh, of validation rule you are covering your projects, or just tell me. uh, oh yes sir validation rules are the rules that we used to apply in Salesforce for that condition correction so that we can apply certain condition to that object and verify whether it is correct or not that we have given the input to the Salesforce. Okay. And Aniket. the rules for applying the validation rules are first to object. First, we have to select which object. Second, on which field. And third, the condition that we give it to the validation rules. Yes, so that's the condition, and there are various rules that we applied in validation rules. For example, there are whether the sentence is blank or first name Okay, last okay. names are not Okay, same. thank you. Sir, थैंक यू। yes, sir. ऐसे किसी ने बोल दिया ना थैंक यू करके तो रुक जाइएगा आप लोग। ओके। Okay, sir. अनिकेत फटीक। अनिकेत फटीक। किसी ने भी एक बार पूछा गया तो 10 बार उसको बोलना नहीं चाहिए। ओके। अर्जुन सोनिया। Aniket Raja, sir. यस। कैन वी बाईपास द वैलिडेशन रूल? अनिकेत फटीक। Aniket आपको कैमरा प्रॉपर नहीं है वही है लेकिन, क्योंकि देखो इंटरव्यूअर एक ही बार पूछेगा आपको, 2 बार 3 बार एक ही एक क्वेश्चन पूछते नहीं जाएगा, एक याद रखना आप लोग। ये चीज़ आप लोग थोड़ा तो सा। ये बता दे रहा हूँ कि आपका सिटिंग पोस्टर कॉमन सर्च कर लो आपके सिटिंग पोस्टर से भी आपके रिजेक्शन है ऑनलाइन में ये मैं लिख के दे दे रहा हूँ आपको कैमरा प्रॉपर नहीं रहेगा इंटरव्यू विल नॉट एबल टू एंटरटेन कोई इंटरव्यू नहीं करता आपको, याद रखिएगा। आप वही बोल रहा हूँ कि आप लोग प्रॉपर वे से देखिए, अदरवाइज तुमको तकलीफ जाएंगी। चलिए। Hello, हाँ यस। hello. हाँ यस। Sir, once applied, validation rule cannot be bypassed. ओके, वैलिडेशन रूल कैन नॉट बी बाईपास। Bypassed. ओके। चलिए, थैंक यू। Can we deleted the validation rule in a Salesforce? Yes, we can deactivate it. Delete. Can I Uh, deleted the validation rule in a Salesforce? no, sir, we cannot delete the validation rule. We can deactivate it. Okay. Aniket sir eye contact should be in front of the camera Okay. अर्जुन सोनैया। अर्जुन सोनैया। Juman अंजुमन। अंजुमन। Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Can I deleted the validation rule in a Salesforce? No, sir, we cannot delete validation rule in Salesforce, but we should deactivate it. Okay. कोमल चंबरकर। Yes, sir. Yes. Start your camera. So we cannot delete the validation rule if we not need of that particular validation rule, then we deactivate that particular validation rule as well. Okay. There is no need to that particular validation rule. Yes. Okay. Next one. Yes. Just tell me. Kritika, Yes, sir. Good can I morning. modify the validation rule?
Yeah, you can modify the validation rule. Can I delete the validation rule? No, no, we can't delete. If we didn't need that validation rule, we Val- just have to deactivate. Validation rule is a read only or read or Valid write only editable. validation field when we display it is only read only field. Okay. Check. Thank you. Neha Dong. Neha. Thank you. Thank you. Okay. Yeah, very good. Like Pushkar. Pushkar. Yes, sir. If I have the data date I have the one data I have the one data field in our object. That name is called as a date of birth. Okay. Yes, sir. I find the year from that date of birth. So which function is used in a validation Uh, rule? we are using year function in the validation then. Okay, okay. What is the ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, these are very important. They may ask to you. Okay. Yes. What is the use of date value function? Uh, Date Pushkar? value You start provides your us some. camera, beta. Yes, sir. Yes, बताइए. Date value function provide us month, year, and date. Okay. उसको प्यारा किसके प्यारा कहाँ करके बैठा कैमरा किधर है और फेस किधर है ऑल ऑफ यू देखिए, आप लोग कैमरे की तरफ देखिए ना मुझे. ऐसा कोई तो ये नहीं है ना. चलिए. लिसन हियर वन थिंग. हो गया. लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, जस्ट चेक कीजिएगा आप लोग. लिसन हियर. ओके. अगेन शिव. यस. हु इन द पुष्कर ना. हाँ, Yes, पुष्पा sir. Pushpak. Okay. Yes, sir. Yes, Pushpak. Shiv, what is the validation rules and what are the properties of validation rules? कैमरा What is the use of Uh, validation rule? Start your फेस camera. Hello, Yes. sir. I am audible. Yes, yes, yes. Validation rules in Salesforce are the rules which contains the formula expression that validates our data and returns the value of true and false. True and false. Okay. So validation rules contains the formula expression and it's Hmm. evaluate the data entered by the user. Hmm. Can I delete the validation rule? Mm, so no, Yes. Can I first, delete the sir, validation no, rule? no, sir. First we have to deactivate. After that, Okay. Okay. चलिए मैं स्क्रीन स्टार्ट करता हूँ. यू चेक दैट कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन. लिसन. माय स्क्रीन इज विजिबल ऑल ऑफ यू. No, sir, not no, yet. sir, No, no, sir. sir. ओके. No, sir. वेट. ओके. Now, नाउ. now, yes. नाउ ओके. दिस इज माय वैलिडेशन रूल. देखिए हो रहा है क्या. हो रहा है क्या. यस. I have one question. Yes, यस. sir. जैसे आपने वैलिडेशन रूल को डिलीट किया है, ठीक है, अगर मुझे वैलिडेशन रूल को यूज ही नहीं करना है तो हाँ. deactivate भी कर सकती हाँ हूँ तो ना? डीएक्टिव मैंने वही तो नहीं, मैंने डीएक्टिवेट नहीं पूछा ना आपको. कैन आई डिलीट द वैलिडेशन रूल. कर सकते थे, एक्चुअली ये पता था आपने हाँ मतलब तो वही बताया ना था। क्वेश्चन में वही बोला ना. मैंने डीएक्टिव नहीं पूछा ना. मुझे पता है ना डीएक्टिव. मैंने ही पढ़ाया था कि आफ्टर यूज ऑफ दैट वैलिडेशन रूल यू डीएक्टिवेटेड दैट. मीन्स आपको इन फ्यूचर कुछ एरर नहीं आएंगी, है ना. ओके. मैंने वही पूछा था. ओके. चलिए. थैंक यू. ओके.
इस डेफिनेशन जैसे आंसर्स बिल्कुल नहीं देने हैं. नो बडी विल गोइंग टू सिलेक्ट यू. हम्म, डेफिनेशन बकोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ वो हाँ, कच्चा है. एग्जाम्पल देना, हर चीज़ को आप एग्जाम्पल देना आप लोग, ओके, कि हमने प्रोजेक्ट्स में क्या किया, छोटा सा ही ना, कितने हमने वैलिडेशन रूल्स किए थे ना, वो एग्जाम्पल डालना उसके अंदर। हाँ लगाए, क्यों लगाए वो बताओ. हाँ, बस 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 कैसे लगाया हमने ये बताइए। ओके, चलिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किसको अपन पूछ रहे हैं, ऑल ऑफ यू नो दैट, देखिए ऐसा नहीं कि हर जन को एक क्वेश्चन आएगा। शालिनी, शालिनी, Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग। ओके, can we avoid the deleted of record through the validation rule? Sir, can we avoid deletion of record? Actually, we cannot deal with deletion of record through validation rule. We can deal with insert or update. You answered with updates. Okay, okay, Yes, okay, sir. okay. चलिए, थैंक यू। तो तन्मय वैष्णवी. यस, यस सर। तन्मय वैष्णवी. ओके, यस। शालिनी, what is the difference Sir, between what is the difference between is null and is empty? is null returns the values which are only in the number format. It does not support the text format. And is empty supports the text as well as the number format. It returns both the values. And what is the difference between null and the is empty? Null and the is empty. Okay. Before I ask you what is the difference between is null and the is empty, now I ask you what Okay, is the okay. difference between null and the is empty. Null supports zero value. Like if any value is not there, either zero is also not there, then it supports Okay. for the number Suppose, value. And so is empty supports the empty values. Like no, it is no, empty or not. no. Okay, I have the one value, so that time I use null or is empty operation. I have one Is value. empty. I have Okay. one value. I have one value, XYZ value. Okay, their data type is number. Okay, so Then that we time will use the is null operator. is null operator. Or Yes. nahi, I say that null is null nahi, is null operator. Okay, if I have the No, then we will not use null operator. Then we will use is empty operator. okay, Because null supports like there can't be any value. Then we will write as null. okay, I have the 10 record, and I have to check that records are empty or not. So that time I use null is Is null empty. or is empty. Very good, is Is empty. empty Okay, we will if you use. all of you remember that if you have the number of records in your object, so that time I have to check by using is null function. Okay, is null function के थ्रू ही हम लोग चेक करते हैं। Is it clear? Yes. Okay, Shadi. Yes, sir. Thank you. चलिए, नेक्स्ट वन, सत्कार। Yes, sir. सत्कार, can I use the validation rule? Suppose I have one object XYZ, okay, and I write down, yes, I ask the question to you, okay. The one type of scenario is here, okay. I have the two objects. The one object, the name is called as XYZ, and second object name is called as the ABC, okay. I write down the one object, one validation rule in XYZ. Can I this validation rule use in a ABC object? Sir, if they have a kind of relationship, then we can use it is called as the cross-referencing of objects. So if they are in relationship, then we can do it. Shalini, Shalini, Yes, yes, sir. can I use the XYZ validation rule in a ABC object? Whenever they are in
But in a relationship, we will use the merge field, sir, from associated object. Then we can cross object field update Okay. Okay. So by that achieving the merge fields. merge field means cross reference object field is used. That time we use a validation rule. Okay. Yes, sir. Sure. Thank you. Okay. Listen here. Thank you. Shiv. Shiv is present. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Just tell me. Okay, what are the different way to make the field required? Sorry, validation rule. What are the different way to use the validation in a Salesforce? वैलिडेशन रूल लगाने के लिए कौन से अलग अलग टाइप से हम लोग लगा सकते हैं? Hello, sir. यस. हाँ. Hello. हाँ बोलिए. How many way to write down the validation rule in a Salesforce? Yes, sir. आवाज आ रही. By. Hello. शालिनी, टेल मी. Sir, one way to apply is only through validation rule. Another way to apply is through Apex triggers. Yes, very good. Very These are both the ways we can apply a validation rule to any object good. Okay. before saving or after update. ओके. शालिनी, आर यू मतलब आप प्रिपेयर्ड हो तो आप लोग आपका रहना कहाँ पे? Sir, I live in Delhi. दिल्ली ना. सो Yes. यू कॉन्टेक्ट टू एलन सर. ओके. एलन सर Yes, sir. विल रेफर टू सम कंपनी टू यू फ्रॉम दिल्ली. ओके. Okay, sir. बैंगलोर तो आप जाओगे नहीं है ना? सर ये वेनेसडे को जब इनका सिनेरियो बेस्ड अपना इंटरव्यू हो जाएगा ना, वहां से मैं लिस्ट बना लूंगा किसको भेजना है. हाँ, नहीं नहीं सर, शालिनी का ये कवर अप कर लो सर आप. इन्हीं का निकाल दूंगा लाइन. हाँ. और अभी जो अपने 4-5 लाइन कंपनी लाइनअप है वो उसी के लिए अपने को शॉर्टलिस्ट करना है बच्चे. हाँ. यस यस यस. सर उसका जेडी भी भेज दीजिएगा सर, तो हम लोग देख लेंगे कि क्या There is no सिलेबस. as such JD खाली नहीं. यस सर. There is no as such JD for this profile. It's a soft Salesforce developer profile. ओके. शिव. सर हमारा इंटीग्रेशन पार्ट का सर रहता है. वी आर वीक इन इंटीग्रेशन एंड LWC एवरी कंपनी इज LWC. आस्किंग यस फॉर यस द यस सेम. यस यस. LWC फिर से करवा रहा हूँ हाँ, तब आज तक से. भी है सर. Sir, आज से our weak LWC. point is only that. ओके ओके. That's why, that's the main reason our resumes are also not getting shortlisted even after applying. Integration. Okay. Yes, You sir. must require Set, the. Yes. change sets, REST API, Oh, SOAP API, okay. these. इसका Okay. सब रेज्यूमे डालना में भी नहीं होता है शालिनी. सर बट रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे पूछते हैं क्या आपको चलिए चलिए. इंटीग्रेशन आता है मैं क्या. लिसन हियर. ओके. आप लोग जब बड़ी कंपनी में जाते हो ना, एसेंचर एंड ऑल दोज थिंग्स, ओके, तो तब पूछा जाता है. तो LWC में आज से कर रहा हूँ. ओके. 8 to 10. तो आप बैठ जाइए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसी को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि LWC इज़ वेरी वास्ट. ओके. बट हम लोग जो पढ़ेंगे ना तो उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा. आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा. ओके. और एक छोटा सा प्रोजेक्ट्स रहेगा. उसके बाद इंटीग्रेशंस भी आपको पढ़ाएंगे. इंटीग्रेशंस बहुत बड़ा है, मतलब अनलिमिटेड इंटीग्रेशंस है कि कैसे यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे. लेकिन उसमें से जो अपने को 4 एक क्या बोलते हैं मेथड्स होती है. इज इट क्लियर? हम लोग कहीं से डेटा रिट्रीव करते हैं, कहीं पे डेटा लेके जाते हैं, तो वो चीज़ें अपन देखेंगे. मतलब हम लोग 2 और को ज्वाइन करेंगे. ओके. तो आपको रेस्ट API, कॉल आउट मेथड्स है ना, STP प्रोटोकॉल्स, वो वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट टाइम. तो विद इन द मतलब नेक्स्ट आज से नेक्स्ट मंडे तक आपका वो हो जाएगा. उसके लिए अभी टेंशन नहीं. इज इट क्लियर? ओके. सर पक्का हो जाएगा ना. 100%. अभी आप ज्वाइन कीजिए ना, 8 to 10 आप ज्वाइन कर Yes, sir. सकते हैं. ओके. ये अभी कर रहे हैं. चलिए. थैंक यू. चलिए. वैष्णवी. Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग. चलिए. What is a formula field and what are the use of formula field? Okay. So, formula fields in Salesforce are read-only fields and in which we write our formulas to calculate any values or any or custom fields that we want to calculate, perform calculation. For that, we use formula fields.
For example, if we want to calculate the means if we want to collect full name of any person that is getting entered, but we only have fields like first name and last name. So in that we can use a formula field to calculate the full name by Okay. joining concatenating the first and last name. Okay. वैष्णवी कावड़े, Yes, sir. वैशाली कावड़े. Vaishnavi Kaur. नहीं, yes, I know that. दूसरी Okay. लड़की की बात कर रहे थे आप। Yes, sir. Vaishali, Good morning, sir. what is the procedure to use the formula field in a Salesforce? Give the The step. Give me the steps to uh, create one formula field in a Salesforce. So firstly, we need to select the object. After that, we need to go to that object. Then click on the fields, update fields, and after that, we need to click on the new. After that, we need to select the formula fields, Mhm. and whatever the formula fields we need to insert with that object, we need to write it down that fields, and after we save that button. Okay. Vaishali, Yes, sir. how many? What is the limitations of formula field in in one object in a Salesforce? Mm, there is hundreds. Vaishnavi, Shalini, Yes, sir. Shalini, how many? Uh, how many formula field? Maximum formula field limitation in a Salesforce? Check that, okay? ये क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा. Well, Might be 32 or 35. okay, okay. And how many validation rules are attached in a Salesforce? Vaishnavi, yes. Hello. हाँ बोलिए. Uh, Sub formula fields for I think it's around 3000 or 4000 character limits for formulas. 3800 900. 3900. Yes, 3900. 3900. Okay, okay, okay. चलिए देखिए. Listen here. तन्मय, तन्मय. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Just tell me what is the formula field and what is the use of formula field. Okay. So And give the basically, formula example field. to example you work in a project using formula field. Right. सर कैमरा So basically, yes, sir. कैमरा So camera on है sir. नहीं है और आपका नहीं ऑन है। वो एक्चुअली दूसरे इससे कीजिए आप लोग. वो एक्चुअली कैमरा अलग होगा, उसमें आईडीज दो डालिए. बोलिए सर ठीक है, कैमरा ऑन कर लीजिए सर. ना. ओके. So basically, formula field. Sir, am I audible? यस यस यस. Yes, sir. So basically, formula field in Salesforce are read-only fields which are used to calculate custom fields. Sir, these formula fields are applied in single object. These are field level fields on which we can automatically calculate a value based on their field or formula. And for example, if we have to calculate for example, in my project, according to my project, there were a number of days and total days availed. So during this, we can apply the formula that total days minus applied days for the leave. So we can calculate the total available days for the leave. Okay, thank you. Yes, Shiv. Shiv. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Why the formula field is read-only field? सर एक शिफा करके लड़की भी है। हाँ हाँ पता है पता है. Why the formula field is read-only? Hello. Yes. शिव आपका नहीं The क्या है, formula आपका ये बराबर रखिए क्योंकि कितना देर के बाद आप रिप्लाई करते हो यार, है कि नहीं? वो इंटरव्यूअर नहीं रुका रहता है. नेटवर्क नहीं ना, अभी इंटरव्यू देना नेटवर्क है. इशू। इंटरव्यू देना है आप लोगों को, तो नेटवर्क इशू रहेगा तो वो बोलेगा ना भाई ये सेल्सफोर्स के साथ काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी सबको. नेटवर्क है तो इंटरव्यू मत बैठो। हाँ, इंटरव्यू बैठना ही नहीं उससे वक्त मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि कैसा होता है तुमने ये नेटवर्क तो इंटरव्यू बैठना ही मत। हाँ ये आंसर दे दिया ना तो उसको समझ में आ जाता है कि भाई ये सेल्सफोर्स में काम कर रहा है, उसके घर में वाईफाई नहीं है, वो सीधा रिजेक्ट कर देता है आपको.
सीधे जाना है, बैंगलोर जाना है इंटरव्यू देने चुपचाप। हाँ सीधा बोलते हैं ना कि आप आइए बोलते हैं, क्योंकि विदाउट वाईफाई आप इंटरव्यू दे नहीं सकते, सिंपल बता रहा हूँ आपको। ओके। Hello. हाँ बोलिए। So sorry, sir, for interrupt because I am not in Nagpur, sir, because I am in small village. So that's why here फिर there is. फिर वो नहीं चाहिए नहीं आंसर, नहीं वैसा नहीं चाहिए आंसर। ये नहीं चाहिए। वी आर द प्रोफेशनल ये पूरा पर्सन। जमाना खत्म हो गया, तुम्हारी एक्सक्यूजेस सुनने के लिए ये इंटरव्यू सेशन नहीं रखा रहा है। नहीं आपको बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं, क्योंकि कैसा होता है बेटा, वो आप कौन से इसमें रहते हैं, लेकिन आप जब शेड्यूल करते हो दैट टाइम यू कम इन अ करेक्ट प्लेस। ओके। दे रिक्वायर द वाईफाई ऑल दोज थिंग्स। तभी तो कभी एचआर डायरेक्ट बोलते नहीं ना, पर आपसे टाइम से शेड्यूल के थ्रू ही वो इंटरव्यू लेता है। कभी कंपनी अपना शेड्यूल नहीं देती है आपको, याद रखिएगा। शालिनी इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, वैष्णवी ने, आपका ही शेड्यूल काउंट किया जाता है। वो कभी भी एचआर आपको पूछता है कि यस आपको कौन सा शेड्यूल है करके, वो कभी नहीं देता कि मेरा ये शेड्यूल है आपको इंटरव्यू देना है, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। तो उस वक्त आपको सही टाइम पे आना पड़ेगा। अब सर ने आपको दिया था ना टाइम, ओके, तो आपको पता है ना वो टाइम कैसे दिया है, तो आप उस वे से रहो, क्योंकि तुम्हारा 3 से 4 बार मैंने पूछा आपको, तो आपका रिप्लाई थोड़ा लेट आ रहा है। ओके चलिए। विधि जोशी, विधि जोशी, Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। ओके यस, just you know why the formula field is read only in a Salesforce. Mm, Vidhi, yes, sir. yes, सोफिया, बेटा ऐसा नहीं होता है ना। शिफा Hello, शिफा sir. सीफा, 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 Sir, formula शिफा field वेयर आर यू? at यस home. यस Am I audible? यस यस हाँ, यस नहीं अभी आवाज नहीं आती यार। Am I audible now? यस यस सीफा, जस्ट टेल मी, बोलिए। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Validation rule. Sorry. Formula fields are read-only fields because if we if it is not read-only, then at certain time anyone can change the formula. Okay, just tell me, Sophia. Okay, is it possible to write a validation rule on delete, record delete procedure? Mm. Yes, sir. नहीं होता है बेटा, कभी हम लोग वैलिडेशन रूल इज ऑलवेज यूज रिलेट एट द टाइम ऑफ इंसर्शन ऑपरेशन। ओके Yes, sir. Insert and update only. ओके, हम लोग डिलीट नहीं कर सकते वैलिडेशन रूल्स के थ्रू। समझ में आ रहा है आपको? चलिए लिसन हियर। उसके बाद त्रिशा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन रूल्स एंड फार्मूला फील्ड? हेलो त्रिशा, त्रिशा नहीं, इसे लेफ्ट टू सर ओके नेटवर्क। ओके ओके। Safia, what is the difference between formula field and the validation rules? Tanmay sir, किसको पूछ रही? Alan sir, only 15 students are present here. Okay. हाँ, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है, ले लिया हूँ। हाँ, yes, yes. So मैं all of पहले you. ही स्क्रीनशॉट अभी Hmm. देता ना उनको रात में, शाम को आज को। हाँ, yes, all of you remember that this is a theoretical questions. Okay. आपको 2 बजे के आसपास आप लोगों का एलएन जो ग्रुप है, आपका फैमिली ग्रुप है, वहाँ पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको। लिसन हियर, इज इट क्लियर? सिनेरियो बेस्ड वैलिडेशन रूल्स के, फार्मूला फील्ड्स के। तो दैट टाइम मुझे उसके ऊपर ही आपके मतलब आपको प्रोसेस करके उसको सॉल्व करके आपको भेजना है, उसका स्क्रीनशॉट। समझ में आ गया आपको? यस Okay, sir. हाँ, Yes, sir. all of you Yes, sir. remember that. Okay, this is a Today theoretical only, sir. टुडे ओनली। ओके, उसके बाद आपका वेडनेसडे के दिन शेड्यूल दिया जाएगा आपको, और उसके साथ आपके क्वेश्चन और आंसर्स भी दिए जाएंगे आप लोगों को। अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा वे, क्योंकि वैलिडेशन रूल्स और फार्मूला फील्ड में आपने चालू में देखा होगा एक आधा या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो। ओके,
लेकिन आते हैं आप लोगों को, इसलिए हम लोग बता रहे हैं आप लोगों को कि जस्ट। और यहाँ पे बहुत लड़के हैं लेकिन बैठे नहीं हैं यहाँ पे, सो उनकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। ओके, चलिए। ओके, listen here all of you. Okay, Vidhi, are you here? Yes, sir. चलिए। uh, what is the relationship, what is the relationship and what is the use of relationship? देखो बेसिक तो मैं ऐसे ही चालू करूँगा। ओके, बोलिए। विधि रिप्लाई फास्ट। Hello, sir. हाँ, Yes, sir. Sir, we use the relationship when we have to connect the two objects, or when we have to relate the two objects. हेलो, Uh, uh, हाँ बोलिए। and there हाँ are two बोलिए, types of बस एंट्री relationships. सेशन चालू है, बोलिए। तुझं कोणतं होतं वाटलं? हा, तर तुम्हाला नाही का, तुम्हाला ॲड नाही केलं का? तू एलन सरांच्या याच्यात होता का? नाही ना? मग 9:30ला येणार ते. ओके, ईमेल ओके, हो चालेल, ओके, हो, ओके. Yes, how many types of relationship? Sir, there are mainly two types of relationship: lookup relationship and master detail relationship, and also many to many relationship. Okay, चलो. Vaishnavi, Vaishnavi, Yes, sir. Yes, sir. what is the difference between lookup relationship and the master relationship? Okay. So, firstly, relationships in Salesforce are used for connecting or means bridging between two objects. And in lookup relationship, we have loosely based connection between the objects, which means that the parent and child records in the objects, they won't be dependent on one another. Whereas in master detail relationship, there are tightly bound relationship, which means if we delete a parent record, then its child record also gets deleted. This is also called as cascade deleting. And after that, in lookup relationships, we the sharing means the securities of the parent objects won't be applied on the child object, but in master data relationship, the child inherits all the properties of the parent object. And for lookup relationship, we can create up to around 38 relationships on an object, but there can only be two master detail relationships Okay, on a okay, one okay, okay. object. Thank you, thank you, thank you. Vaishali Kavde, Vaishali, Vaishali. Yes, sir. Okay, okay. Just ask the questions. Okay, please. Okay. Can I connect the standard object with a custom object by using relationship? Yes, sir. And what is the relationship between the यस सर नहीं बोलने का, उसको पूरा बताने का ना बेटा शरीनी, स्कूल में बोलना। नहीं है आप लोग यार, बार बार समझे, स्कूल में नहीं हो आप आपको लोग। नहीं करना है। क्या क्या बोला मैंने? कैन ए स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट कैन बी कनेक्टेड विद कस्टमर ऑब्जेक्ट, तो उसको बोलना है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। बोलिए, आप बताइए। यस, आई कैन कनेक्ट द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक अकाउंट विथ माई कस्टम ऑब्जेक्ट। और एक आधा कस्टम ऑब्जेक्ट अपने बनाए नहीं इतने कस्टम ऑब्जेक्ट, तो ऐसे Yes. एग्जाम्पल देना। ओके, Yes, sir. We can connect the standard object with the custom object. विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज यूज इन बिटवीन? Lookup relationship, sir. Yes, Master relationship, sir. Sorry. okay, Shalini. Yes, sir. Okay, which type of connection We, relationship you use in a standard object and the custom object? we can have lookup relationship as well as master detail Yes. relationship. The difference देखिए, is मैं that आपका क्वेश्चन जब पूछता हूँ ना, शालिनी को दे रहा हूँ ना, तो शालिनी के आंसर सब याद रखिएगा आप लोग प्रॉपर वे से। ओके, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो आपको नहीं आया तो मैं बताता हूँ। वैष्णवी, Yes, sir. बोध, वैशाली, वैशाली। Yes, ओके, sir. स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स और कस्टम ऑब्जेक्ट्स को जब अपन कनेक्ट करते हैं तो बाय यूजिंग लुकअप रिलेशनशिप एज वेल एज द मास्टर रिलेशनशिप, दोनों के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं।
यस और नो? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैशाली, वैशाली, Yes, ओके, sir. यहाँ पे देखिए, फॉर विच स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट वी कैन हैव द मास्टर डिटेल रिलेशनशिप? Mm, sir, account, contacts, solution. यस बेटा, मैंने क्या बोला था, आप तो ध्यान दीजिए ना। सर फॉर एक्चुअली ना फॉर नेटवर्क इशू के कारण आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही मुझे। ओके ओके ओके, चलो ओके, बता दीजिएगा, मैं उसको एक्चुअली, तो आप लोग वीडियोस देख लीजिएगा। तन्मय, 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 आई हैव द क्वेश्चंस रैपिडली। Yes, am I visible? नो, यस विजिबल, Not, नहीं नहीं नहीं, विजिबल नहीं हुआ आपको। शिफा, sir, अभी शिफा नहीं, शिफा, देखिए जिसका नेटवर्क Yes, प्रॉब्लम sir. है मैं उसको क्वेश्चन पूछूंगा ही नहीं मैं, ओके। चलिए अभी आप लोग अपना नेटवर्क बराबर रखिएगा। चल, आई हैव द क्वेश्चंस टू यू बेटा, ओके। जिनका एक नाम पे सर रिप्लाई आएगा ना, उन्हीं को क्वेश्चन पूछिए। हाँ मैं वही कर रहा हूँ ना अभी। देखिए मुझे क्या करना है, यस शिफा, ओके। आई हैव द Yes, टू sir. स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स, ओके, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, आई डोंट नो विच वन इज द, बट can I connect the master relationship between the two standard objects? No, sir. Why? We cannot connect. Sir, for master detail relationship, parent object can be standard or custom, but for child object, it should be custom object. Okay, very good, That's very good, why. very good, very good. Okay, what is a what is a junction object and So what is junction object is an object. So junction object is an object which is a common object between two objects to form many-to-many relationship. Shalini? What is a junction object and what is the use of junction object and why is called as a many-to-many relationship? Junction object is an object which is used to associate the between two parents. Like we have to achieve many-to-many relationship. Then we achieve this through creating junction object, which acts as a child to both the parents. Both the parents are in master detailed relationship, so we can have the junction object. It is achieved to create a relationship between two standard objects when they both can't be child. So we Yes. create one common child, and that acts as a child object for Okay. both the parents. How That is called a how junction. many junction object you use in a Salesforce? There are many junction objects like we have between two standard objects. For example, price book, products. We have our order products, order line items as a junction object. Very Many good. more are there, sir. Very good. Very good. Very good. Very good. Okay. I give the answers to a question to you, scenario based question to you. Okay. देखिए शालिनी के समान आप लोग सब आंसर्स दीजिएगा, ओके। कभी कभी नो डाउट, कभी कभी यूज़ नहीं होता उनका प्रॉपर वे से, बट वो फ्लो में क्या होता है, एचआर वो ओवरलाइन कर लेता है उस चीज़ को, ओके। शिफा आप देखिए, आप रुक रुक के आंसर देते हो, वो गलत है ना, आप रुक के आंसर नहीं देना। सत्कार, चुप कर, Yes, sir. Yes, सत्कार sir. चुप कर। आई हैव द वन सिनेरियो, ओके। Yes, sir. Okay, the one relationship between the two objects, XYZ and ABC. XYZ is your parent object, ABC is your child object. Okay, sir. Can I change the uh, data from parent object to child object in a relationship? Sir, can you repeat, please? I have the two objects, XYZ object, okay, Yes, sir. is a parent object, ABC is your child object, okay. Okay. I can change the some data in a relationship, okay, Okay, sir. but by using parent to child. Can Yes. can वो पॉसिबल है क्या? To parent to child. No, sir. It is not possible through parent to child. Means if we wanted to update data through workflow, then we can do it through child to parent, but not parent to child. Okay, 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 okay. कृतिका, कृतिका, Yes, sir. कृतिका, I have one data loader, okay. मेरे पास एक data loader है, I have one data loader, okay. And one relationship is created, already created in a object, in your project, okay. The two object is there. The one object is XYZ is a parent object, and second one object is a
ABC object is a child object. Okay, I can change the data through a data loader. So what is the procedure? Can I change the data through data loader in a relationship? डेटा लोडर के थ्रू Yes, हम लोग रिलेशनशिप का डेटा चेंज कर सकते हैं क्या? yes, we can change it. ओके, तो बाय यूजिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग? बाय यूजिंग मास्टर और बाय यूजिंग लुकअप, कौन से रिलेशनशिप में कर सकते हैं हम लोग? जस्ट टेल मी. Sorry, sir, can you please pardon? Okay, I have the two objects. Yeah. The one object is called as the parent object, that is called as the XYZ. Second object is called as the ABC. This is your child object. They are already created inside the Salesforce. Okay, in your project. I have the one data Yes. loader. Okay, uh, I change some data in both the object. Okay, XYZ as well as ABC by using data loader. Okay. तो Yes. आपने बताया कि यस अपन चेंज कर सकते हैं, बट दिस डेटा आर कनेक्टेड इन द मास्टर रिलेशनशिप, उसके बाद भी चेंज कर सकते हैं क्या हम लोग उसको? I am not sure, sir, but I think if they are in connected with a lookup relationship, then we can ओके, इन change that. एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, मास्टर और लुकअप रिलेशनशिप, वी कैन चेंज द डेटा बाय यूजिंग डेटा लोडर. डेटा लोडर के थ्रू हर चीज हम चेंज कर सकते हैं. ओके Yeah. कृतिका, एंड नेक्स्ट वन थिंग इज कृतिका, मुझे क्या करना है? एक्स वाई जेड, द वन ऑब्जेक्ट इज एक्स वाई जेड एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इज ए बी सी. दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. ओके, बाय यूजिंग lookup as well as the master relationship. Example, okay, the xyz is your master, is a parent object, and abc is your child object. You remember Yes, yes. that. Okay, can I change the data through a data loader through parent object? No, we can't change to a parent object, because when we proceed any master relationship or any relationship, we proceed from the child itself. ओके, देखिए सभी को मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यही क्वेश्चंस आपको दोनों तरीके से पूछा था, बाय यूजिंग सेल्सफोर्स एंड बाय यूजिंग इस तरह से. ओके, तो कहने का मतलब ये होता है, आप लोगों को मैं सभी को एक सिंपल बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा. ओके, कभी भी रिलेशनशिप में ओनली रोल अप समरी के थ्रू ही हम लोग डेटा को प्रॉपर वे से सिर्फ पैरेंट टू चाइल्ड में जाता है, प्रोसेस करते हैं. अदरवाइज 95% आर वर्क थ्रू अ चाइल्ड टू पैरेंट. यू ऑलवेज रिमेंबर दैट. समझ में आ रहा है आपको? बाकी का हम लोग क्या करेंगे कल 7 o'clock. लिसन यू ऑल ऑफ यू. कोमल चंबरकर, आपको मैंने नहीं पूछा, देव आपको भी नहीं पूछा मैंने, कल मैं बताऊंगा आप लोगों को. और कल भी आपका 7 o'clock इंटरव्यू रहेगा, एंड दैट टाइम आई आस्क द रिलेशनशिप एज वेल एज डेटा लोडर. ओके, डिटेल में हम लोग देखेंगे और उसमें आप लोगों को सब चीज़ें आप लोगों को बताएंगे. क्लियर हो गया आप?